going to discuss the most common question, that is, what is digital marketing? I have got so many questions that what is digital marketing, why we should go for digital marketing, and who can actually do digital marketing. So don't worry, if you have these questions in your mind, do watch this video till end. I will be explaining in very simple terms, and I can bet you after watching this video, your three questions, what, why, and who can do digital marketing will be clear. So let's get started. So hello everyone, welcome to my channel Digital Shivanii. So now let's understand that what is digital marketing. So first let's understand what is marketing. Marketing का मतलब क्या होता है? Marketing means simply when you try to reach your target audience to simply sell your product or service. That is known as marketing. आप marketing करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. And when you do the same thing, इसका मतलब when you do try to reach your target audience to sell your product or service through digital channels, so that is known as digital marketing. Guys, digital marketing is not the rocket science. Marketing का मतलब simple होता है, आपने अपने product को sell, अपने product और service को sell करना है. और marketing के बहुत सारे तरीके होते हैं. You can go for advertisement, you can go for door-to-door selling, you can go for free trials, and you can also go for digital channels. So digital marketing is a part of marketing, right? जब आप अपनी marketing technique में एक digital channel जोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं digital marketing. For example हम ले लेते हैं, जैसे आपकी एक shop है, right? So to invite the customer or the user to your shop, आप बहुत सारी चीजें करते हो. You organize an event, आप advertisements करते हो टीवी में, रेडियोज में, या आप pamphlets करवाते हो, आप बहुत बड़े बड़े billboards रखवाते हो, posters करवाते हो, right? So this is known as कि आप अपनी shop में लोगों को invite करते हो. In a digital marketing, your shop is your website. आपकी shop आपकी website है. यहाँ पर भी हम same चीजें करते हैं. हम सेम एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, एड कैंपेन्स रन करते हैं, सो दैट टू अट्रैक्ट आवर टारगेट ऑडियंस टू आवर वेबसाइट. सो ऑफलाइन मार्केटिंग में योर शॉप इज वेयर यू ट्राई टू अट्रैक्ट योर टारगेट ऑडियंस, एंड इन डिजिटल मार्केटिंग योर शॉप इज योर वेबसाइट वेयर यू हैव टू अट्रैक्ट योर टारगेट ऑडियंस सो दैट दे कैन सी योर प्रोडक्ट और सर्विस, सो यू कैन सेल देम. सो डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. You simply using the digital channels simply for advertising your product or service. So I'm very clear that what is digital marketing? When you try to market your product or service to reach your target audience through the digital channels, right? So let's go to the second question. Why is digital marketing? This is the question in many people's mind, that why we should go for digital marketing. Guys, ask this question to yourself. Especially the youth. आप अपने दिन का maximum time कहाँ पे spend करते हो? You spend your maximum time on Google, YouTube, Netflix, Amazon Prime, some music app, Facebook, WhatsApp, Instagram, Pinterest, or some dating site, or any other thing. Ask this question yourself. आप अपने पूरे दिन में maximum time online spend करते हो. आपको खाना order करना है, you go for the online. If you want to order some clothes, you check them online. If you want to compare some brand or compare some car or compare a mobile, where you go? You go to YouTube, you go to the website, you go to their social media profiles. Okay, this brand has very good social media presence. It means this brand is very good, right? आप हर चीज online जाके check करते हो. When you are trying to look out for a restaurant or for a hotel, you go to the Google Maps, you see how many reviews are there, you see how many people are liking that. So on the basis of the online presence, you are making this decision. So you should know this कि online marketing, like digital marketing की कितनी importance है, right? हम पहले offline marketing क्यों करते थे? Because that time TV, radio, newspapers और billboards, they were so important क्योंकि लोग उनको ज़्यादा use करते थे, right? But now everyone is spending their 70 or 80% of the time online. When you have a free time, what you do? You simply log in and go to your Instagram, or check your WhatsApp, or check your Facebook profile, or simply watch some movie or on Netflix, or go for the YouTube. तो हम जब सारे
जब सारे जो यूजर्स हैं वो ही ऑनलाइन हैं, सो व्हाई वी शुड गो फॉर ऑफलाइन मार्केटिंग? आप मार्केटिंग किसके लिए करते हो? यूजर्स के लिए. यू डू मार्केटिंग टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड इफ योर यूजर्स are available on the online platform, so why you will do the marketing on the offline platforms? You must have seen that, for example I'm giving you, you must have seen that earlier time there was a billboard. आप कभी भी जाते थे तो बहुत बड़े posters लगे होते थे कुछ brands के, right? You used to see them in the earlier time period. But now, for an example, you are sitting in a car. I have spent 5 lakhs or 6 lakh rupees in that billboard. मुझे मंथली पेमेंट देना पड़ेगा. मैंने वो पोस्टर लगवा दिया. I have paid them on a monthly basis and I cannot remove them. I have paid them 2 lakhs rupees for placing this poster on this particular location, right? A car passes over there, right? But what we are doing? We are busy in our mobiles, excluding the driver seat. All the people, most of the time, 80% of the time, people are sitting in a car and they are watching their Instagram, they are watching their Facebook, or they are watching a movie, or they are watching YouTube or any video. So what is the importance of that poster or a billboard? Nothing. And in digital marketing, you can simply show your product and service very easily to the infinite number of people and in a very low cost. आप बहुत ही cheap rate पे अपने product and service को showcase कर सकते हो, और वो भी अपनी target audience में. So my first point is, आपकी ऑडियंस ही ऑनलाइन है तो ऑफलाइन मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस वही कम हो जाती है. हम मार्केट करते हैं आपके लिए, यूजर्स के लिए. जहां यूजर होगा वहां मार्केटिंग होगी. अगर आप कल को टीवी पे चले जाओगे, यू विल बी स्पेंडिंग द 4 hours or 5 hours of your time on TV, so the advertisements will start running on TV. So now you all are spending your time on the digital platforms. So yes, the digital world is growing. It is not going to be decrease, it is going to be increase. And especially after corona, you must have seen that after COVID-19, the people are spending most of their time on the digital marketing. And you must have seen this industry is going to be the #1 industry in the coming years. And it is the #1 industry, guys. So #1 is your target audience is available on the online platforms. So #1 was reach. So my second point is money, guys. जैसे हमने example लिया कि मैंने एक poster लगवाया, I have paid 2 lakhs rupees for placing that poster. And in a digital marketing, अगर मुझे same अपना product या service दिखाना है किसी भी एक particular location में, so it is very economical. आप बहुत ही low cost में, बहुत ही cheap rates में you can reach to the infinite number of people at a very low cost, right? क्योंकि आप अगर offline marketing में if you place a poster, you don't even know that the people will see that poster, and who is going to see that poster. Is that poster the users which are watching your poster, who is seeing your poster, is your target audience? Yes or no? You don't know any question in your offline marketing. But in the digital marketing, you can check everything. You can track each and everything in digital marketing. So digital marketing बहुत ही economical है as compared to the offline marketing. क्योंकि आप पूरी infinite number of people में आप पहुंच सकते हो at a very low cost. So my #2 point is money. And #3 point is very easy, analyzation and tracking. As I told you earlier, that the offline marketing आपको नहीं पता. आपने एक event organize किया, आपने एक एडवर्टाइजमेंट किया, यू डोंट नो कि वो एडवर्टाइजमेंट जो आप कर रहे हो दैट इज इवन योर टारगेट ऑडियंस और नॉट. अगर मेरा एक प्रोडक्ट है रिलेटेड टू द विमेन, राइट, रिलेटेड टू द मेकअप इंडस्ट्री, राइट, सो इफ आई एम प्लेसिंग दैट पोस्टर, तो वहां पर जा तो मेन भी रहे हैं, वहां पर मेल्स भी जा रहे हैं, फीमेल्स भी जा रहे हैं, तो आई एम वेस्टिंग माई मनी टू शोइंग माई प्रोडक्ट एंड सर्विस टू, बिकॉज दैट इज नॉट माई टारगेट ऑडियंस. बट इन डिजिटल मार्केटिंग इट इज वेरी इजी. अगर आपको अपना प्रोडक्ट सिर्फ फीमेल्स को दिखाना है, so you just have to click a button that your product will only be shown to the all the females and all the girls on the available on the online platform. So it is very easy. आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, और उसके बाद यू कैन सिंपली एनालाइज. मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला, आई कैन सिंपली एनालाइज कि व्हाट इज द लोकेशन, किस लोकेशन से मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किस एज के लोग मुझे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के लोग, लाइक मेरे टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है,
वो कौन सी इंडस्ट्री से हैं, वो क्या ज़्यादा करना पसंद करते हैं, वो क्या खाते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप अपनी टारगेट ऑडियंस को पूरी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज द डिजिटल मार्केटिंग हैज ऑल द डेटा ऑफ यू. आपका सारा डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होता है, and through that data we can simply reach to you and we can simply understand our target audience. Okay, yes, मेरी target audience को ये पसंद है और मुझे इन लोगों को अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस दिखाना है, और उसके बाद भी आप उसको सिंपली ट्रैक कर सकते हो, आप अपने रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हो. एंड फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी एक एड नहीं अच्छी रन करी, one day I'll just run an ad for a product and service. If it not goes well, I can simply off my ad for 2 hours. बट अगर ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर मैंने वो 2 लाख रुपीज दे दिए एक पोस्टर के लिए, आई हैव पेड देम फॉर अ मंथली बेसिस, आई कैन नॉट रिमूव दैट पोस्टर. और अगर वो पोस्टर मैं रिमूव कर भी दूंगी तो भी आई हैव टू गिव देम द मनी. सो गाइज, जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो गाइज, आई हैव गिवन यू द 3 मेजर पॉइंट्स. द रीच, क्योंकि सारे यूजर्स ही ऑनलाइन हैं. The money, the digital marketing is very economical, and the number 3rd is analyzation and tracking. आप simply track कर सकते हो, analyze कर सकते हो that what is running and what is not running for your brand or for your business. So yes, the digital marketing is very important, and now like due to the COVID-19 that it is going to be the number 1 industry, and all the business have really understood the power of digital marketing. And if any business in the coming year, if they will not create their online presence, so they will not be going to sustain in the market for a long period. तो ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपका सलून बिजनेस है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपकी कोई कपड़ों की शॉप है, सलून बिजनेस है, आपका डिज़ाइनर हो, आपका कोई भी ब्रांड है, आपका कोई फूड बिजनेस है, एनी बिजनेस, जिम है, एनीथिंग, यू हैव टू कम ऑनलाइन, यू हैव टू शो योर ऑनलाइन प्रेजेंस, क्योंकि आपके पास आपकी सारी टारगेट ऑडियंस ऑनलाइन प्रेजेंट है. सो जस्ट टैप योर टारगेट ऑडियंस, just start doing what your target audience love, and you can simply sell your product and services to your target audience. So I'm clear with the second point, that why you should go for the digital marketing. Number 3rd point is, who can do digital marketing? This is the very common question, और लोगों को ऐसा लगता है कि digital marketing is so difficult, I cannot do digital marketing. Guys, I can give you a very simple thing. In a foreign country, I was studying a research, like a person was 16 years old kid, or 15 years or 16 years old kid, who was running these successful paid campaigns on the digital platforms. So if a 16-year boy or a kid can do digital marketing, so why can't you do? It's very easy. It's not that you don't want any degree. किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ाई जाती है. सो इट्स वेरी इजी. आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. यू जस्ट रिक्वायर 2 things, इंटरनेट एंड द लैपटॉप. यू सिंपली नीड अ लैपटॉप and internet and a passion to become something. अगर आपके अंदर पैशन है कि आपको सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो आप बहुत इजीली डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो. इट्स नथिंग. आपको सिर्फ समझना है कि आपको कस्टमर को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे दिखाना है. That's it. It's very simple. Anyone can learn digital marketing. Even a 6th class, like अगर कोई बच्चा 6th class में है, he can also learn digital marketing. So don't forget the age factor, the certificate factor. If you are graduate, you are postgraduate, or you are in school, so anyone can go for digital marketing, and it has all the real power. So I will suggest you also that this is the right time to learn digital marketing. So thanks for watching this video, and I will end this video with a very positive note that get up and work on your dreams, and let's grow together. So thank you so much.